Last year we learnt about different parts of computer. This year we are going to learn about them in more detail. A computer is made up of different parts. All parts together form a computer system. Even if any one part is missing, a computer cannot function properly. All parts are generally connected by the wires in order to work. So let us discuss all the parts one by one. The monitor looks like a television screen. It has a power button to turn it on and off. The monitor is also called as visual display unit. Actions done with mouse and keyboard are displayed there. This is monitor. It looks like television. TV की तरह दिखता है और उस पे बटन भी होता है पावर ऑन ऑफ करने के लिए, और इसको VDU बोलते हैं, दैट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट. CPU is also known as central processing unit. It is the brain of the computer. CPU controls the functioning of all parts of computer. The power button in CPU is used to switch on the computer. ये CPU है. यहाँ पे जो पावर बटन दिखाई है पीछे से ऐसे दिखता है, ये सामने से ऐसे दिखता है, और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसे बोलते हैं, और ये ब्रेन है कंप्यूटर का, और इसके ऊपर जो ये बटन है इसे स्विच ऑन कर सकते हैं कंप्यूटर. द माउस इज अनदर इम्पोर्टेंट टूल फॉर कम्युनिकेटिंग विथ कंप्यूटर. The mouse is commonly known as a pointing device. It is used to point and select items on the computer screen. It is used to play games and make drawing as well. माउस जो है वो यूज़ होता है गेम्स खेलने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए, और हम इसे पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं इसे. Keyboard looks like a typewriter. With the help of keys, we can type alphabets and numbers. There are different types of keys such as numeric keys, alphabetic keys, space and enter key. Printer is used to take output of work done in the computer on paper. Documents typed on monitor with help of keyboard is printed on the paper. A pair of headphones can be attached to the computer. They help us to hear sounds and music without disturbing others. They are part of multimedia device of the computer. These multimedia device allows us to hear the sound. Now since we have an idea about parts of computer, let's move ahead and learn about input and output and storage devices. Input devices. The devices which are used to give commands, that is enter data into a computer, are known as input device. These devices include keyboard, mouse, etc. जो devices हम use करते हैं कंप्यूटर को कमांड देने के लिए, कुछ डेटा एंटर करने के लिए, उसे input devices बोलते हैं. Output devices, the devices which are used to give output, that is give result in a form of words, letters, images or sounds, is known as output devices. These devices include monitor, printer, speaker, headphones. जो हमने input devices से कुछ डेटा दिया हो उसको प्रोसेस करके जो उसका रिजल्ट दिखाते हैं, ऐसे डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं. जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, हेडफोन्स है. Storage devices. The devices which are used to store data from the computer are called storage devices. Let's learn about some storage devices. Hard disk is placed inside the computer, inside the CPU. It is rectangular in shape. The work done in a computer is stored in hard disk. It can store huge information in it. The hard disk looks like this. और ये रेक्टेंगुलर शेप में होती है, और इसमें जो भी हम कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने को बोलते हैं वो यहाँ पे स्टोर होता है. CD. Compact disk is generally called as CD. The storage capacity of a CD is less compared to a hard disk. हार्ड डिस्क से स्टोरेज कैपेसिटी CD की थोड़ी कम होती है और ये गोल होती है.
DVD, digital versatile disc, is generally known as DVD. It can store lot of videos and movies in it. It can be carried from one place to another. CD की तरह ही DVD होती है, मगर उससे ज़्यादा डेटा हम वहाँ पे रख सकते हैं और इसको डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोलते हैं. पेन ड्राइव. Pen drive is also known as USB flash drive. Pen drive can be easily carried in a pocket and it can be connected by attaching it to a port area in a computer. Fill in the blanks. Keyboards looks like a typewriter. With the help of keys we can type alphabets and numbers. The devices which are used to give command, that is enter data into a computer, are known as input devices. The monitor is also known as visual display unit. Mouse is used to point and select items on the computer screen. It is used to play games, make drawings as well. The devices which are used to give output, that is give result in a form of words, letters, images and sounds, are called as output devices. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं नीचे. अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो रेड कलर करना है. मैंने यहाँ पे सिर्फ नाम लिखे हैं, आपको कलर करना है. और अगर वो ट्रू है तो ब्लू कलर करना है. CPU is used to take the print of work done in the computer on paper. CPU का इस्तेमाल हम प्रिंट आउट निकालने के लिए करते हैं क्या? अगर नहीं, हम प्रिंटर का इस्तेमाल कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालने के लिए करते हैं. तो रेड. द मॉनिटर इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. नहीं, CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसीलिए रेड कलर करना. स्पीकर्स आर अटैच्ड टू अ कंप्यूटर. दे आर पार्ट ऑफ अ मल्टीमीडिया डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर. यस, ब्लू कलर करना. The devices which are used to give output, that is give result in a form of words, letters, images or sounds, is called as input devices. No, result जो दिखाते हैं वो output devices होते हैं, इसलिए रेड कलर करो. The mouse is used to point and select items on the computer screen. It is used to play games and make a drawing as well. That is mouse. बराबर है, ब्लू कलर करो. Guess who I am. Who am I? And match the columns. I look like a television screen. I have a power button to turn it on and off. That is monitor. I am the brain of the computer. The power button in me is used to switch on the computer. That is CPU. Where is CPU? Is this. I am used to take the print of work done in computer on paper. The document typed on the monitor with the help of keyboard is printed on the paper. That is printer. I look like a typewriter. With the help of keys we can type alphabets and numbers. Keyboard. I am attached to the computer. You can hear sounds and music without disturbing others. Headphones. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और हमें ये वर्ड्स यहाँ पे ढूंढने हैं. जैसे यहाँ पे मैंने ढूंढा है कीबोर्ड, ऐसे ही CD, DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, ये आपको ढूंढना है. चूज द करेक्ट ऑप्शन. द फुल फॉर्म ऑफ DVD इज डिस्प्ले विजुअल डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क. दैट इज डिजिटल वर्सटाइल डिस्क. The full form of CD is compact disc. Dash has the largest capacity to store the information. Hard disk has the largest capacity. Hard disk is placed inside the CPU. Dash is an input device. Keyboard is an input device. तो इसी के साथ ही ये अपना सेकंड चैप्टर ऑफ कंप्यूटर ख़त्म होता है. मिलती हूँ अगली वीडियो में. मेरा और एक चैनल है टेस्ट द लाइफ विद प्रेकुल, प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर देना. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. मिलती हूँ अगली वीडियो में. बाय बाय.